Good evening. My name is Jaskiran, and today I'm going to talk about the main theme of writing task 2 in the IELTS exam. Like, there are mainly 18 or 19 main theme on which examiner generally put as a statement or give us a statement over there. Education, job, food and eating habits. It may be about consumerism, globalization, media, technology. In the technology, we can cover e-commerce, e-banking, then different sources of energy like alternate source of energy, nuclear energy. Topic may be about building, vertical building, horizontal building. It may be about aesthetic, the building, then about the crime, capital punishment, corporal punishment. इस तरीके नाल साढ़े कोल टोटल 18 टॉपिक्स हैं एंड आई विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट theme is the education. In the education, again I shortlisted 13 topic. According to me, if we make such kind of the framework, we can easily prepare for the exam. Here the first topic is distance learning cannot bring the benefit as much as attending college or university. So there are 13 topic, but I am taking only first one. Distance learning cannot bring the benefit as much as attending college or university. To what extent do you agree or disagree? Whenever we start the task 2, we know we have 40 minutes. I suggest my students to do brainstorming for 5 minutes. Like, one should bring out the ideas. That is called response to task. That is very important. 25% scoring is of response to task or task response. I think it's main important thing, because if monkey asks banana, give him banana, not an apple. So first thing is that response to task. For that we can do brainstorming. Like here I accord with the notion up to great extent, because मेरे according the distance learning इन्ना ज़्यादा benefit नहीं करती जिन्ना कि ਆਪਾਂ college या university जाके benefit लेंदे हैं. First thing is that whenever we like go to college, then there is a face-to-face interaction with the teacher. That is called two-way communication. Teacher teach कर रहा है, student gain करता है, doubt clear हो जाते हैं. Student not only get the content prescribed lesson but also gain deeper knowledge. Teacher ਉਹਦੇ doubts ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ clear ਕਰਦਾ. More focus and systematic study, timetable ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, punctual ਰਹਿੰਦਾ student can assess material from the library. Student library जाके भी material ਨੂੰ assess करता है. They can also help each other. In that way learning become quite interesting. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Then not only the student get academic knowledge, but they participate in the extra curricular activity. ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਵਿਚ ਗਰੂਮ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਦੈਨ if we see university student, they get better campus placement also, क्योंकि रेगुलर कॉलेज आ रहा है, in that way in touch है. Generally according to survey report, student who go for the regular college or university, they have the better placement, they become more confident. But कुछ डिसएग्री वाले पॉइंट भी है, कितने ना कितने लिमिटेशंस भी लगती हैं, और आप कहते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग भी बेटर है. लाइक पीपल हु आर वर्किंग और हाउस वाइफ हु आर नॉट एबल टू गो टू कॉलेज डायरेक्टली, जो नहीं जा सकते रेगुलरली, बट दे हैव अ क्वेस्ट टू गेट नॉलेज. उन्होंने इच्छा है कि होर नॉलेज गेन करन. सो वी कैन मैंशन वर्किंग पीपल, हाउस वाइफ कैन फुलफिल देयर क्वेस्ट ऑफ गेटिंग हायर एजुकेशन. वो अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं. या पीपल ऑफ रिमोट एरिया, दे कैन ऑल्सो अवेल द एजुकेशन. सो ज़्यादा पॉइंट अपने को कादे हो गए, दैट इज़ अ डिसअग्री वाले, सॉरी. लाइक इफ आई से कि डिस्टेंस लर्निंग नालों रेगुलर कॉलेज आना ज़्यादा बेनिफिशियल है. वी हैव मोर पॉइंट अबाउट दैट थिंग, सो वी कैन मैंशन इन द टास्क 2. My student, you have to keep it in mind. First thing is that response to task. Read the topic carefully and try to write out your own ideas over there. Then avoid to use a template. I don't suggest my student to use a
रेडीमेड टैंपलेट बिकॉज दैट मेक द एसे मकैनिकल. सब दा सेम ही स्टार्ट होंदा है नाउ अ डे second paragraph to begin with, which I really don't suggest. I feel that that is quite monotonous. You should try to bring out your own idea. Then coherence of idea is very important. Like आपस च तालमेल होना आइडियाज़ का. अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ मूवी देखते हैं बड़ी अच्छी स्टार कास्ट है बट मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ सीक्वेंस वाइज चीज़ां नहीं हो रही then nobody would like to see that movie. So captivation, or we can mention carrying of the examiner, is very important whenever you do task 2. Then is the grammar or lexicon. We can say we should use wide range of the vocabulary. We shouldn't forget it's the exam of Cambridge. IELT is like International English Language Testing System. So level of international, we should try to use varied range of the vocabulary over here. Then grammar. ग्रामर अगर आप देखिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ज़्यादा चलती है, सब्जैक्ट प्लस V1 प्लस सब्जैक्ट. दैन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल सेंटेंसिस. उन्होंने सिंपल सेंटेंसिस ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ और कंपाउंड्स कन्वर्ट कर ਲੈਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ. दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बड़े आराम ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं. यू कैन सी कि ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ फ्रेम आउट कर ਲੈਂਦੇ हैं. So I am trying to give you ideas like you can make such kind of notes for yourself, and in that way a student can easily prepare for the exam rather than going for the thorough reading of the topics. I think if you know how to express your idea and if you make such kind of notes, then you can easily crack the IELTS exam. Thanks for watching this video.